Very good morning, students, and Jai Hind. I am Adesh with my subject accountancy. Chapter 3rd, Theory Base of Accounting, Accounting Standard, and Indian Accounting Standard. We cover the theory base of accounting and accounting standard also we have covered till now. And today's topic is Indian Accounting Standard. So, how it is different from IFRS and from the IFRS and IASB and IASC and international accounting standards. So how Indian accounting standards are different from the IFRS and the international accounting standard. Today we will learn these things. So before starting our topic or the lecture, so I hope you all are fine at your home and be healthy and be safe and stay home for your healthy. Okay, so students, be careful. So today we are going to discuss about the account in Indian accounting standard. So first, measurement of elements of Indian accounting standard. What are the measurement are there? What are the measurement elements are there? Those who measure the Indian accounting standard, which are basically based on financial statement. Every business needs to prepare their financial statement, and in those financial statements and these financial statement, how these are based on Indian accounting standard when we preparing our accounts in the country of India. Okay, in our country India. So for the measurement of these terms or the values, if we have to record in a financial statement, so these are basically measures on five bases means it can be recorded according to historical cost, it can be recorded according to current cost, it can be recorded according to realizable value or settlement value, and it can be recorded according to present value and on fair value. So basically these cost or the valuation or the measurements are there, which we are going to learn first. So first is historical cost. What is historical cost and historical cost what say? If I am talking about the historical cost, so historical cost say whenever I was purchase any assets, so that value or that assets is recording to according that value when I paid cash to acquire that assets at that time. 5 साल पहले मैंने कोई एसेट्स परचेज़ की 5 लाख रुपए की, तो मैं वो 5 लाख रुपए की एसेट्स को आज भी 5 लाख ही रिकॉर्ड करता हुआ आ रहा हूँ अपने अकाउंट्स के अंदर. सो दैट इज़ द हिस्टोरिकल cost. Now you got it. I have not subtracted the depreciation. I have not calculated the current value of that assets. What is the current value will be there in my book. So I have what the amount I have paid to acquire that assets, only that value still I am recording in my accounts. So assets are recorded at the amount of cash or cash equivalent. Paid or the fair value of the consideration.
of the consideration given to acquire them at the time of their acquisition. Now we got it. Here what the said, assets recorded according to that amount, or cash or cash equivalent. All the assets are recorded according to the measurement of money and according to the amount or cash equivalent. Paid, it means what is the cash or cash equivalent paid or the fair value, actual what the value they have paid, or the fair value of the considerations given to acquire them एट द टाइम ऑफ देयर एक्विजिशन। मीन्स जिस टाइम पे हमने उस एसेट्स को एक्वायर किया, उस टाइम पर जो हमने अमाउंट पेड किया है उसको एक्वायर करने के लिए, सो दैट विल बी द हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर एसेट्स। हैव यू गॉट इट? जब कभी भी हमने जिस एसेट्स को परचेज़ किया वही वैल्यू हम अभी तक अपने अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते आ रहे हैं। सो दैट इज़ द हिस्टोरिकल कॉस्ट। Now if I am talking about the current cost, so current cost say what should be the current cost today after subtracting the depreciation from that assets। current cost से कि जो उसमें डेप्रिसिएशन चार्ज होना है अकॉर्डिंग टू द रूल रेगुलेशंस ऑफ द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, सो देन व्हाट विल बी द value should we record in our books according to the rule regulations and according to subtract the depreciation from that assets, so that will be the current assets। हमने 5 लाख की यहाँ पे परचेज़ की, 5 लाख की एसेट्स में अब तक हमने यहाँ पे डेप्रिसिएशन माइनस नहीं किया था, बट करंट कॉस्ट के अंदर हम उसमें डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद तब उसको जब रिकॉर्ड करेंगे दैट विल बी द current cost। So assets are carried at the amount, here was recorded, now here is carried। okay, इसको कैरी कर रहे हैं हम लोग, वो रिकॉर्ड कर रहे हैं उस टाइम पर। carried at the amount of cash or cash equivalent, cash equivalents that would have to be paid if the same or an equivalent asset was acquired currently। it is clear students what it said? first of all, this asset is carried, not it is recorded।
यहाँ पर ये परचेज की थी तो अकॉर्डिंग टू दैट वी हैव रिकॉर्डेड, बट हेयर वी आर कैरिड, इट मीन्स इस एसेट्स को हम पीछे से कैरी करते हुए लेकर आ रहे हैं, मीन्स पिछले कुछ सालों से परचेज किया था पिछले कुछ सालों में, और उसको अब तक हम उसके बैलेंस को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। तो एसेट्स आर कैरिड एट द अमाउंट ऑफ कैश और कैश इक्विवेलेंट्स, कैश और कैश इक्विवेलेंट के अकॉर्डिंग उसको हमें कैरिड करना, दैट वुड हैव टू बी पेड, जिसके लिए हमें अब पेड करना, जो बैलेंस पीछे से कुछ लेकर आते हैं वो उसके लिए अब हमें पेड करना, इफ़ द सेम और एन इक्विवेलेंट एसेट्स वॉज एक्वायर्ड करंटली, अगर हम उस तरीके की सेम एसेट्स को अब एक्वायर्ड करें, पहले हमने परचेज़ की थी तब हमें 5 लाख के थे, लेकिन अब उसी तरीके की एसेट्स को ही कैरी बैलेंस होता हुआ आ रहा है हमारे पास, तो आज की डेट में अगर हम उसी तरीके की एसेट्स को दोबारा एक्वायर करते हैं, सो व्हाट द कैश वी विल पेड, सो दैट कैश amount whatever we are paying for that asset will be a current value or current cost of that assets. So assets are carried at the amount or cash or cash equivalent that would have to be paid if the same or equivalent assets acquired currently. Is it clear? So that will be the current value of that assets. फॉर एग्जांपल 5 लाख की परचेज़ की थी हमने हिस्टोरिकल कॉस्ट में, लेकिन इसमें 5 लाख की ही लिखते आ रहे हैं हम लोग, लेकिन यहाँ पर हमने उस पर सपोज़ करो डेप्रिसिएशन माइनस किया, लेकिन उसमें 4 साल बाद हमने देखा कि वो 4 लाख की हो जाती है, तो अगर उस सेम एसेट्स हम 4 लाख में परचेज़ करते हैं तो दैट विल बी द करंट कॉस्ट ऑफ दैट एसेट्स। नेक्स्ट वन इज सी, रियलाइजेबल वैल्यू। realizable or settlement value। After read this word you confirm what this value is having। realizable value से यहाँ पर ये 5 लाख की हमने परचेज़ की थी, करंट में 4 साल बाद देखते हैं 4 लाख की होती है, लेकिन अब ये सेल कितने में हो रही है, इस असेट्स को सेल करने में कितना वैल्यू हम रियलाइज़ कर रहे हैं, तो मे बी सम डिस्काउंटेड वी आर गिविंग और अलाउिंग टू द परचेजर। 4 लाख की हो सकता है 3,80,000 में हम सेल कर दें, हो सकता है 4,30,000 में हम इसको सेल कर दें, दैट विल बी द रियलाइजेबल वैल्यू एट विच अमाउंट द सेटलमेंट इज़ देयर विद दैट एसेट्स। Is it clear to all? So here assets are carried at the amount of cash or cash equivalent that could currently be obtained by selling the asset in an orderly disposal। ओके, जितनी वैल्यू में हम उसको डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं, जितनी वैल्यू में उसको सेल कर रहे हैं, उसके बाद जो हमें उससे अमाउंट रियलाइज़ होता है, रिसीव होता है, दैट विल बी द रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ दैट एसेट्स। तो एसेट्स हेयर आल्सो वी आर कैरिड, हम यहाँ पे कैरिड कर रहे थे अभी भी, 4 लाख की वैल्यू यहाँ पर होती है उसकी, कैरिड करते हैं, तो कैरिड एट द अमाउंट ऑफ कैश और कैश इक्विवेलेंट दैट वुड करंटली बी ऑब्टेन। ओके, अगर उसके अगेंस्ट में हम कोई भी कैश या कैश इक्विवेलेंट अमाउंट हम
ऑब्टेन करते हैं उसके सेल करने पर, सेल द एसेट्स इन ऑर्डरली डिस्पोजल। उसको जब हम उसको डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं, उसको सेल कर रहे हैं, तो उसके सेल ऑफ करने पर जो भी हमें नेट रियलाइजेबल वैल्यू रिसीव हो जाती है उसको सेल करने से, सो दैट इज़ द रियलाइजेबल वैल्यू। हियर 3 वैल्यूज़ वी हैव डिस्कस्ड स्टिल। सो हिस्टोरिकल कॉस्ट 5 लाख में परचेज़ की, करंट कॉस्ट 4 लाख उसकी वैल्यू होती है 4 साल बाद डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद। लेकिन अब अगर हम बात करते हैं तो रियलाइजेबल वैल्यू हो सकता है वो हमें 4,20,000 रुपये रिसीव हो जाए, हो सकता है 4.5 लाख रुपये, 4,50,000 रुपीज़ रिसीव हो जाए, हो सकता है 3,80,000 रिसीव हो जाए। इट्स डिपेंड ऑन द एट दैट टाइम व्हेन वी सेलिंग or we are disposing of our assets. So actual what cash we are acquiring or receiving the selling of that assets. Is it clear? So now we having the next topic is, next heading is present value. What is present value said? Present value said in current cost, because both are they having only the little bit differences in current cost and the present value. Historical cost 5 lakh of rupees we purchase. In this current cost we uh, calculate after the depreciation. It means, for example, after 4 years we valued that asset was 4 lakh of rupees एंड दैट इज़ द रियलाइजेबल वैल्यू। 4 लाख की एसेट्स हमारी कितने में सेल होती है, ज़्यादा में सेल होती है या कम में सेल होती है, इक्विवेलेंट टू करंट कॉस्ट। बट हेयर इज़ प्रजेंट वैल्यू। प्रजेंट वैल्यू से इन करंट कॉस्ट वी सब्ट्रैक्ट ओनली द वी डिडक्ट ओनली द डेप्रिसिएशन, बट इन प्रजेंट वैल्यू वी विल डिडक्ट द डिस्काउंट वैल्यू ऑल्सो, by which we can calculate what is the actual amount we can receive against that particular assets in future also. ओके हम यहाँ पे 4 लाख की थी, हमने इस एसेट से हमने एक्सपेक्ट किया होगा 3,90,000 रुपीज़ हम रिसीव कर लें, तो उसके लिए हमने कुछ डिस्काउंट ऑफर कर दिया। दैट्स वाई वी कैन रिसीव 3,90,000 टू अट्रैक्ट द परचेजर। ओके, सो दैट इज़ द present value of these assets. So assets are carried at the present discounted value of the future net cash inflow that the item is expected to generate in the normal course of business. Is it clear? According to the market, according to the inflation or deflation, sometimes we offer the discount because we purchased that type of assets in last few years. So in this
technology or this assets is not related to the current or the present usable. So that's why if we have to acquire cash from that assets, we allowed some discount by which we can acquire some assets and we can receive some cash against that assets. So assets carried at present discounted value, जो भी present discounted value है उसको सब्ट्रैक्ट कर लिया जाता है ताकि उसमें से हम एक्चुअल वैल्यू को रिसीव कर सकते हैं या रिसीव कर सकें जो हमारी एसेट्स की वैल्यू है प्रेजेंट में। करंट कॉस्ट हमने कैलकुलेट की डेप्रिसिएशन के बाद कि इतनी हमारी करंट कॉस्ट है, बट आफ्टर दैट वी आर गिविंग सम डिस्काउंटेड टू द purchaser. That's why they can purchase and they can pay amount to us as a cash inflow that the item is expected to generate normal course of business. Normally activities are there in our business, and according to that what the cash we can generate after allowing discount or after allowing the some discounted or some rebate to the purchaser. So next one is D. Here is fair value. What are these fair value? Fair value say if we have to settle our liabilities against a particular assets, so then we doing the valuations of that assets and that liability. If we give exchange or if we giving that assets against that liability, so that is the exchange value of that assets towards the liability. So actually what the actual assets value was valuated at that time when we are doing the exchange with the liability and settlement of the liabilities with that assets, so that will be the fair value of that assets. Okay, for example that assets may be हो 3,90,000, हमने यहाँ पे 3,90,000 रुपये के लिए, लेकिन वहाँ पे हमें कंफर्म होता है हमारी लाइबिलिटीज़ 3,50,000 रुपीज़ है, लेकिन अगर अब भी हम उसका वैल्यूएशन करते हैं दोबारा से, तो दैट एसेट्स इफ़ वी हैव गिवन फॉर द सेटलमेंट ऑफ दैट लाइबिलिटी, 3,50,000 रुपये की लाइबिलिटी का सेटलमेंट करने के लिए हमने 3,90,000 रुपये की अपनी कोई एसेट्स दे देते हैं, सो दैट विल बी द फेयर वैल्यू ऑफ that asset, means 3,50,000 will be the fair value of that assets because we are settling the liability against that assets and the liabilities are only of 3,50,000 but assets value is 3,90,000. So in exchange whatever the assets is given, so that will be the fair value of that assets in our books of account. So assets are carried at the amount at which they could be exchanged for a liability or a liability settled between knowledgeable willing parties in an arm's
um, arm's length transaction. Is it clear? Assets carried at the amount at which they could be exchanged or a liability settled between knowledgeable willing parties in an arm's length transactions. Okay, and the liability is settled with that assets. Maybe sometimes liability value will be more comparison to the value of that assets, so that possible, that chances may be there. So here I have one more difference. So I have one more concept in which we will doing the difference between IFRS and Indian GAAP or Indian accounting standard. So let's see the difference. Difference between IFRS and Indian accounting standard or GAAP. So in between only two differences are there, which we have learned from the difference between IFRS and Indian accounting standard. So first difference is there. IFRS or International Financial Reporting Standard are principle based. Principle based, while Indian GAAP or Indian GAAP or General Accepted Accounting Principle or accounting standards are rule based. Is it clear? IFRS is IFR are principle based, while Indian GAAP or accounting standard are rule based. This is the first difference in between the IFRS and Indian accounting standard. Is it clear? क्या डिफरेंसेस हैं इसके अंदर? IFRS के अंदर हमारा कोई भी एक प्रेस्क्राइब फॉर्मेट मेंशन नहीं है, बट according to Indian accounting standard, the format of balance sheet or profit and loss or the final account is prescribed, under which head, or we can say here the schedule third for the balance sheet, schedule third of Company Act 2013 is followed according to the Indian accounting standard, and there it is prescribed under which head the which term will come. For example, current assets, if we showing in the balance sheet, so what terms will come in current assets? Only those terms we will record. Other terms we cannot record in the under the head of current assets. Is it clear? But according to IFRS, we can record anywhere for any assets. Second one is IFRS are based on fair value, exchange value concept. Okay, fair value concept, while Indian GAAP or accounting standards are based on historical cost concept. Okay,
They record according to this, according to IFRS. IFR is based on fair value concept, while Indian GAAP or accounting standard are based on historical cost concept. Historical cost concept say at what value we acquired the assets, and then we record according to that value, at which value we have acquired that particular assets. But we record in IFRS, we record at that fair value in which value we can exchange that assets with the liability, or we can settle the liability according to the value of that assets. लाइबिलिटी वैल्यू 4 लाख है तो उसकी एसेट्स की वैल्यू यहाँ पर 4,50,000 भी हो सकती है, 3,80,000 भी हो सकती है. बट हिस्टोरिकल कॉस्ट से एट वॉट वैल्यू वी पे टू एक्वायर द एसेट्स. Okay, so these are the some Indian accounting standard concept we learn, elements according to which we measure the things over here. So students, prepare your notes related to the topics whichever we discuss daily basis, and thank you for today. Thank you.